Good morning, children. Today we are going to discuss the question paper of English half yearly exam, which was conducted on 28th September 2020. All right, I hope you found the question paper quite easy. So, children, today I'm just going to discuss all the question answers and the passage and the letter writing word meanings of the question paper. In case you have a doubt, you may understand with this video. Alright, so let's get started. Children, this is your question paper which you had attempted. Alright, so there were 5 questions. Question 1 was tick the correct answer, and you had 10 questions under this section. So each question carried 1 mark each. Okay. So next page is question 2. Read the passage and answer the following questions. So this was a small comprehension, and with this related there are 5 questions. All right. So 3 fill in the blanks, 1 objective type question and 1 opposite. Okay, so there were 5 questions in this question number 2. Each question carried 1 mark. Okay, then comes question 3, write true or false. So in this also 5 sentences are given. Each sentence carried 1 mark. Question 4, short answer questions. So you had to write the answers very short. So in this 6 questions are given. Each carried 2 marks. Okay, for example, question A carried 2 marks, question B carried 2 marks similarly. Question 5 is write a short paragraph which carried 4 marks each, and application 4 marks each. So children, in the next slide I am going to give you the answers of the question paper. So the first question is tick the correct answer. Question number 1, find the suitable collective noun. So in this you have 3 options and you have to tick one of them which fits the most in the blank. So dash of musicians performed well. So in this you have to give the collective noun of musicians. So children, you had studied in grammar portion in the chapter nouns, right? Types of nouns. In that you had the topic collective noun. So from there I had given you this question. So musicians के लिए बेटा हम collective noun कौन सा use करते हैं? Band. Okay. So next question is tick one proper noun for the given common noun. So आपने पढ़ा था बेटा noun chapter में proper noun, common noun, right? So common noun is country, and you have to give one proper noun for country, that is India. Jabalpur is a city, Prayagraj is a city, but country is India. It is a proper noun. Number 3 is arrange these words in alphabetical order. Children, you had studied in chapter 1. Let's revise in grammar book. Okay, from there I had given you alphabetical order, chapter number 2 in your grammar book. So that is butterfly and caterpillar B. You have to arrange it in alphabetical order. So the correct option is number 1. Number 4th question is fill in the blanks with is, am, are, was or were. So children, you had studied helping verbs. I had told you in chapter 6 and 7 of the grammar book you had studied helping verbs is, am, are, and chapter 7 verbs was or were, right? So from there I have given you this question. So yesterday you dash unwell. सो बेटा येस्टरडे हम कल की बात कर रहे हैं, हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं. सो आर तो होगा नहीं बेटा, बिकॉज आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस है, राइट. एंड वॉज भी नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लियरली यू के साथ यू सेकेंड पर्सन है, यू के साथ हम आर या फिर वर ही यूज़ करेंगे. सिंस दिस स्टेटमेंट इज़ अबाउट
येस्टरडे यानी बीते, पास्ट का है, ठीक है। तो पास्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, वर। ऑलराइट, सो यू वर अनवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। सो बेटा ये जेंडर चैप्टर आपने जब पढ़ा था, राइट, ग्रामर बुक में नंबर्स एंड जेंडर जब चैप्टर पढ़ा था उसी में से मैंने ये दिया है क्वेश्चन। देयर आर डैश हॉर्सेस इन हिज फार्म। सो बेटा हॉर्सेस का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा, मेयर होगा, मेयर। ओके, नंबर 6 इज विच वन ऑफ द स्पेलिंग्स इज करेक्ट। सो विच वन ऑफ द स्पेलिंग्स इज करेक्ट इन दीज 3 ऑप्शंस। Number 1 is CURSSED, number 2 is CURCED, number 3 is CURSED. So all these spellings are given of cursed. Cursed chapter आपने पढ़ा था chapter 2 the inauspicious justice में, alright. So उसमें से ये spelling मैंने cursed दी है, जो spelling है correct वो है third option. Question 7, what is the meaning of the word escaped? सो चिल्ड्रन एस्केप्ड का करेक्ट मीनिंग है रैन अवे। ओके, एस्केप्ड मतलब भाग जाना। क्वेश्चन 8, हाउ डज द गार्डन लुक ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। सो बेटा ये क्वेश्चन है द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग चैप्टर से, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग। सो स्प्रिंग सीजन में गार्डन कैसा लगता है, अनक्लीन लगता है, नहीं, डर्टी लगता है, नहीं, प्रिटी लगता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज Number 3, pretty. Number 9 question is fill in the opposite gender of the word given in the bracket, right? So you have to fill with the opposite gender of gander. The dash laid a golden egg. और bracket में gander दिया है, so gander का opposite क्या होगा बेटा, goose. All right. What is the meaning of the word dejected? सो बेटा डिजेक्टेड का मीनिंग होता है सैड। लिटरेचर में से मैंने दिया है वर्ड मीनिंग से। क्वेश्चन 2, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो ये बेटा ये छोटा सा कॉम्प्रहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया था। सो ये रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है और इसमें से टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। ऑल राइट, एंड इन क्वेश्चन 2 देर आर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल राइट, सो टोटल इज 5 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच। सो नंबर 1 क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ एस्किमोज, यानी एस्किमोज का मेन ऑक्यूपेशन क्या है बेटा। आप ये देखिए ग्रीन से अंडरलाइन है, थर्ड लाइन में आप देखेंगे हंटिंग एंड फिशिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन। सो एस्किमोज के 2 मेन ऑक्यूपेशन थे, हंटिंग एंड फिशिंग। सो इसलिए बेटा थर्ड ऑप्शन सही होगा, बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम मीन्स हंटिंग ऑल्सो एंड फिशिंग ऑल्सो। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। एस्किमोज हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स। बेटा आप ये कॉम्प्रहेंशन में आप फर्स्ट लाइन देखेंगे, दे आर नॉट टॉल पीपल बट दे हैव स्ट्रॉन्ग लिम्स। ओके, तो वहीं से ये सेंटेंस लिया गया है, वहीं से ये फिल इन द ब्लैंक्स लिया गया है। बी इज दे हैव एक्सलेंट नॉलेज ऑफ कार्विंग। ये देखिए लास्ट लाइन 5th लाइन में है, दे हैव एक्सलेंट नॉलेज ऑफ कार्विंग, तो यहीं से बेटा लिया गया है। एस्किमोज हैव कॉमन लैंग्वेज। सो ये जो सी वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, एस्किमोज हैव कॉमन लैंग्वेज। बेटा आप फर्स्ट लाइन देखेंगे पैराग्राफ की, दे हैव अ कॉमन लैंग्वेज, सो वहाँ से लिया है। क्वेश्चन 3 इज राइट द ऑपोजिट फ्रॉम द पैसेज अबव। वीक, सो वीक बेटा यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ में दिया था स्ट्रॉन्ग लिम्स, सो वही था। वीक का ऑपोजिट होता है बेटा स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, कुछ बच्चों ने हार्ड लिखा है, राइट। सो बेटा वीक का ऑपोजिट हार्ड नहीं होगा, हार्ड का ऑपोजिट होता है सॉफ्ट। ऑल राइट, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू और फॉल्स। ए, द विलेजर्स किल्ड द वुल्फ। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाई? बिकॉज द वुल्फ किल्ड द sheep. B1, Jack and his mother had a cow named Daffodil. This statement is also false because Jack and his mother had a cow named Daisy. Alright. C, Akbar missed an important meeting. Yes, this statement is true. Why? Because when Akbar fell down, so he had a sprain in his leg. उनके पैर में चोट लग गई थी, so he couldn't attend the meeting. D, roses, lilies and daffodils flowers are mentioned in the poem The Coming of the Spring. Yes, this statement is true. All these flowers are mentioned in the poem
the coming of spring. E. Sparrow, turtle, lion and cow were the 4 friends. No, false. You already know who were the 4 friends in the chapter. True friends. Question 4. So coming to question 4. A1 is, all these questions in question 4 carries 2 marks each beta. Okay, every question carries 2 marks each. Earlier 1 mark each was given to every question, but from question 4 2 marks each, all the 6 questions. So question 4 is short answer questions. You have to write the answers in a short way, not more than 2 to 3 lines. All right. So A1 is, who attacked the sheep? So correct answer is the wolf attacked the sheep. B is, what lesson do you learn from the story The Inauspicious Justice? Answer is, the lesson we have learned from the story is that we should think properly before a decision. So this question is given from chapter 2 in your English literature book, Inauspicious Justice. All right. C, why was the turtle caught by the hunter? So this question is given from the chapter True Friends in your English literature book. So why was the turtle caught by the hunter? The turtle was caught by the hunter because the turtle could not walk quickly. That is why the hunter caught the turtle. All right. Moving to the next question, D1. How does the poet know that the spring has arrived? This question is given from the chapter, from the poem, The Coming of the Spring. The poet knows that spring has arrived by the happiness and joy that is spread all around the world. So beta, all these questions I have already made you write in your copies. I have already given you the answers when I was teaching the chapter. So I hope you had no problem in these 4 questions. So coming to question E, frame sentences. First word is lonely, second word is neighboring. सो आप बेटा कोई भी सेंटेंस बना सकते थे, नॉट स्पेसिफिकली जो मैंने आपको कॉपी में कराया था वही बनाए, वो स्पेसिफिक नहीं था बेटा. अगर आप अपने मन से भी सेंटेंसेस आपने बनाया होगा आंसर शीट में, सो आई हैड गिवन यू फुल मार्क्स फॉर दैट. ओके, सो लोनली का सेंटेंस आपने कुछ भी बनाया हो, अगर सही है वो सेंटेंस तो आई हैड गिवन यू मार्क्स. सिमिलरली फॉर नेबरिंग ऑल्सो. सो कमिंग टू क्वेश्चन 6, क्वेश्चन F. राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नंबर 1 इज अराइवल. अराइवल का मतलब होता है, मीनिंग है कमिंग. सो दिस वर्ड इज गिवन फ्रॉम द पोम कमिंग ऑफ द स्प्रिंग. ओके. नंबर 2 इज प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन वर्ड इज गिवन इन चैप्टर 2 द inauspicious justice. फ्रॉम दिस चैप्टर आई हैड गिवन यू दिस वर्ड फॉर द मीनिंग. So which means proclamation means public announcement. All right. Coming to question 5, long answer question. This question carried beta 4 marks each. Okay. So in a question, that is under question 5, write a short paragraph on importance of eating healthy food. ओके. सो बेटा मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग करवाया था, उसमें आपको टॉपिक भी दिया था इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फूड. सो बेटा जिसने भी लिखा होगा आई हैड गिवन यू मार्क्स फॉर ईच करेक्ट sentence. All right. So children, some of you have written this paragraph on your own. आपने कॉपी में से लर्न करके नहीं लिखा है, बट आई हैड गिवन यू मार्क्स. आप लर्न करके लिखिए या अपने आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए. अगर पैराग्राफ आपका सही है, सो आई हैड गिवन यू मार्क्स फॉर दिस पैराग्राफ राइटिंग. ऑल राइट. लेकिन चिल्ड्रन कुछ बच्चों ने सिर्फ 3 सेंटेंसेस लिखा है, किसी ने 2 सेंटेंसेस लिखा है, सो आई हैड कट मार्क्स ऑन दैट. बिकॉज बेटा ये शॉर्ट पैराग्राफ है. शॉर्ट पैराग्राफ शुड कंटेन मोर देन 5 और मोर देन 5 सेंटेंसेस. ऑल राइट. सो इसीलिए अगर किसी बच्चे ने 3 सेंटेंस लिखा है तो मैंने मार्क्स कट किए हैं और मैंने फुल मार्क्स नहीं दिया है. अगर किसी ने सिर्फ 2 लाइन्स लिखी है इस पैराग्राफ में, या 1 लाइन लिखी है, या 3 लाइन्स लिखी है. ओके. अगर किसी ने भी मोर देन 3 या मोर देन 4 लाइन्स लिखी है तो आई हैड गिवन देम फुल मार्क्स इफ देयर आर नो मिस्टेक्स. ठीक है, कंडीशंस अप्लाई. सो कमिंग टू क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 5B, क्वेश्चन B पार्ट. ओके. सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर 5 days लीव एज यू आर सफरिंग विद फीवर. सो बेटा मैंने आपको एप्लीकेशन राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग भी कराया था. सो ये देखिए, ये मैंने आपके डिवाइड कर दिए हैं फॉर्मेट में मार्क्स. सो दिस क्वेश्चन कैरीड 4 marks each. सो इफ़ यू हैव रिटन डाउन द एड्रेस,
So I had given you 1 mark. For the date is 0.5 half marks, and for the principal आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज दिस कंटेन्स 5 मार्क्स ईच. बेटा ये पार्ट्स में है ना, राइट. सो अगर एक भी पार्ट आपने मिस किया होगा सो आई हैड कट मार्क्स फॉर दैट. ओके, सो ये लिखने के लिए 1 मार्क्स एंड देन सब्सक्रिप्शन for 1 mark. Okay, so these 4 marks have been divided accordingly with the letter. So children, I hope you had cleared your doubts. In case you still have doubts in question paper, you can ask me on the WhatsApp group. So thank you so much children, and thank you for cooperating.